Assalamualaikum everyone. Are you ready for the today's IELTS information webinar or you can say stream live? Okay, Farwa कह रही है yes, I'm waiting. जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स और हम साथ साथ चलते हैं. सो वेलकम बैक. आज की हमारी जो करियर इन्फॉर्मेशन सीरीज है उसका जो है आज सेकंड एपिसोड है, जिसके बारे में जो है हमने लास्ट जो हमारी एपिसोड थी वो थी करियर्स इन मीडिया, और आज जो है वो आइल्स इन्फॉर्मेशन के बारे में है. जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, और मैं चाहूंगी कि थ्रू आउट द सेशन आप लोग जो हो इंटरेक्ट करते रहें हमारे गेस्ट के साथ. सो इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे जो में, और आज जो है हम इनसे जो है जानेंगे आइल्स के बारे में. वेलकम मैम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी है मैम? आई एम गुड, थैंक यू. हाउ अबाउट यू? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मिस रबिया, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच. ओके, सो मैम मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है, बिकॉज डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ने भी क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं. सो हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो ये है कि क्या आप हमें थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकती हैं? Miss Rabia, your voice was not very clear, but I would try to guess the question. That your question was what actually the IELTS is. Was it? Yes. Okay. So basically, IELTS is like IELTS. If we go for the word, the letters stand for, it's like International English Language Testing System. So as the name tells, it's a test that is internationally recognized, and it is mandatory for the students or the people who want to go abroad. जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, स्टडी वीजा पे या इमिग्रेशन अप्लाई करनी है या विजिट वीजा पे जाना है, तो some countries over there IELTS is mandatory. Okay. Why it is very important for abroad study or work? See, basically nobody can deny the importance of English language. Like English is one of the languages that is highly spoken. It is the language that is official language of 100 countries right now. And if you talk about, yes, and if you talk about Pakistan, even Pakistan, in Pakistan, it's the national official language. English is the official language of Pakistan. It is the language that is spoken all over the world. सारी दुनिया में English बोली जाती है, समझी जाती है. I'm not saying कि सारी दुनिया में इसके बहुत fluent speakers हैं, but English is the most easiest communication tool जो सारी दुनिया में समझा और बोला जाता है. तो जब आपको कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो वहाँ की जो कम्युनिटी है, मेजॉरिटी अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज बोल रही है एंड आप अनेबल हो उसको बोलने में या अंडरस्टैंड करने में, कॉम्प्रिहेंड करने में, तो आपको डिफिकल्टी होती है. तो बेसिकली आइल्स जो डिमांड किया जाता है कंट्रीज की तरफ से, वो आपकी अपनी मुश्किल को कम करने के लिए है. यूजुअली अगर आप देखें तो विजिट वीज़ा जो है, जो एम्बेसीज हैं, जो इमिग्रेशन एम्बेसीज काम करती हैं मुल्कों के लिए मुख्तलिफ, या जो लोग जाते हैं वर्क वीजा पे, उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड नहीं होती है आइल्स. इट्स द डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट वेरी कंट्री. ओके, सही. अच्छा, कैन यू टेल अस कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं आइल्स टेस्ट के, और क्या स्कोरिंग का प्रोसीजर और क्या चीज होती है उसमें आइल्स के स्कोर में? Sure. Before getting into the like components of IELTS speaking test, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि IELTS कितनी तरह का होता है. Basically IELTS दो तरह का है. The one is like general IELTS test and the second is academic IELTS test. General IELTS test उन लोगों के लिए है जो विजिट वीजा पे जाते हैं बाहर, जो वर्क वीजा पे जाते हैं. And study IELTS, academic IELTS, as the name shows, it's academics.
तो जो लोग बाहर स्टडी वीजा पे जाते हैं, एकेडमिक आइल्स इज फॉर देम. Hmm. Okay. So now tell us about the components. Okay, basically, IELTS ke, it doesn't have component, it's a modules. We call them modules. So IELTS has 4 modules. Okay. जैसे like the natural language learning, if we talk about the natural language learning procedure, it starts with listening. Then a child goes to speaking, and then the child starts reading. Then writing comes. So similarly, IELTS has 4 modules: listening, speaking, reading, and writing. Okay. Okay. Usually जो myths और misconceptions है about the IELTS वो क्या क्या है usually जैसे कहा जाता है कि IELTS बहुत ज्यादा मुश्किल है, IELTS जो है वो हम नहीं कर पाएंगे, वो जो fear और एक misconceptions type बनी हुई हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Whenever I take a new student, initially I just counsel that student. Basically, it's just a psychological barrier. It's a myth that IELTS is something very difficult. IELTS is not at all difficult. It's just the game of your brain, actually. The way you tune your brain will respond to you in the same manner. Language learning is not a difficult thing. It's a procedure, it's a step by step process. Usually difficult तब बन जाता है जब students कहते हैं something will happen like this and we'll be able to score 8.0 in IELTS. That is not the case. You have to give time to IELTS, you have to listen to your trainer, whatever your trainer is telling you, and most like I'll give you the example of a student who's spending like nowadays the fee of a trainer who's charging for IELTS is like almost 30 to 50,000 depending on the learning skills of the learner. So the point is the students, they think that we have paid this much fees, now the trainer is entirely responsible for our teaching process. Aisa nahi hota, my dears. The case is you have to learn, you have to take the pain. अगर स्टूडेंट्स आइल्स करना चाह रहे हैं, इट मीन्स देयर होल फ्यूचर इज बेस्ड अपॉन आइल्स. सो अगर आप टेक इट सीरियसली, जस्ट स्पेंडिंग an hour on daily basis when you decide that you have to do IELTS, and trust me, not more than a month you'll be able to score 8.0 if you follow your trainer's proper instructions. ओके. अच्छा, जैसे आप ट्रेनर हैं और आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है आइल्स करवाया होगा, तो उसमें जो है यूजुअली जो है स्टूडेंट्स कितने मंथ्स में या कितने डेज में जो है इजीली आइल्स का टेस्ट जो है वो कर जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रिपेयर कर लेते हैं? Rabia, it's a very good question and I'm happy that you asked this. देखिए, we have 5 fingers. 5 fingers are not equal. So everybody's learning capacity is different. And as far as it comes to learning a language, so it's different. So it varies from student to student. Some people, they prepare for the IELTS within 15 days and they score very good. But for some people, it takes time. So it depends on the student's ability and his dedication, his passion, and his hard work as well. हेलो. Yes, ma'am, you're audible to me. Please continue. ओके. अच्छा, अगर हम ये देखें कि जो बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी यूजुअली जो है इंग्लिश टू सेकेंड ईयर एंड मैट्रिक, तो उनके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा आई थिंक सो इनको पास करना और इजीली आगे की तरफ मूव करना. This is again one of the misconceptions. Usually we think the higher the education is, the good English is going to be. It's not the case. Trust me, I have been teaching PhD scholars or the like people who have done PhD and they're not very good at language. So it does not matter that what is your education as far as IELTS is concerned. Even a matric student, they can score very good with a very less amount of time when it comes to IELTS. ओके.
अच्छा मैम, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ है, हम वो भी देख लेते हैं। जैसे फरवा ने जो है हमसे क्वेश्चन किया हुआ है कि आइल्स जो है Okay, I can see her question. It's, I think, IELTS for Germany. Yes, a few colleges or universities, they are accepting yes. IELTS. You need to check the specific college or university you are applying in. They'll let you know whether they need IELTS or PTE or Duolingo. But IELTS is acceptable in Germany as well. ओके सॉरी मैम, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टरबेंस होगी है मेरी साइड पे, बट स्टिल नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या Ma'am Rabia, आएंगी you're ताकि जो है वो उस अगर उनका माइंड है बाहर जाने के लिए, प्रिपरेशन के लिए और प्रोसीजर के लिए, तो उसके लिए जो है students who want to go abroad for higher studies. First of all, you need to decide which country you want to go to. आप किस मुल्क में जाना चाहते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करें उस मुल्क में कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ढूंढे जहां पे आप जाना चाहते हैं. कीप योर चॉइसेस 2 to 3 एंड लाइक योर अपने पास ऑप्शन हमेशा ओपन रखे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिसाइड दैट मुझे मेरी पहली डेस्टिनेशन ड्रीम जो है दैट इज लाइक ऑस्ट्रेलिया, देन कनाडा, देन जर्मनी. अपने पास वेरिएबल्स जरूर रखें. डोंट स्टिक टू वन, बिकॉज इफ यू रिजेक्टेड बाय वन देन इट वुड टेक यू लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड द नेक्स्ट वन. वेरिएबल्स रखें, बहुत सारे मल्टीपल डिसीजंस रखें. देन इन दोज मल्टीपल कंट्रीज do decide that which universities or colleges you are going to take admission in. Contact them and ask them which language test do they require. For example, they might ask you to do PTE. That is also an English test. Some universities or colleges, they'll ask you to do IELTS. तो पहले अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करें कि वो आपसे कौन सा लैंग्वेज टेस्ट करवाना चाहते हैं. वंस डिसाइडेड, आपका कंट्री डिसाइड हो गया, आपका वहाँ पे एडमिशन अप्रूव हो गया, देन दे विल टेल यू कि हमने आपका एडमिशन अप्रूव कर लिया है, आपके पास इतना टाइम है अब हमें अपने आइल्स के डॉक्यूमेंट्स भिजवाने का, अपनी आइल्स का सर्टिफिकेट भिजवाने का. ओके, अग्री टू दैट. उसके बाद अपने आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. इफ यू थिंक यू कैन डू ऑन योर ओन, वेल एंड गुड. इफ यू थिंक नॉट, देन आप कोई ट्रेनर ढूंढ लीजिए. एंड यूजुअली आई रिकमेंड कि अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं and your proficiency of language is not that good, so go for one-to-one training sessions. I won't recommend you taking a class of 20 people. In those classes, बुरा कुछ नहीं उन क्लासेस में, you have to manage. But the point is, फिर आपको one-to-one feedback और acknowledgement मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं. Okay. How can I improve listening and reading? My dear, there are multiple ways to improve your listening and reading. I don't know you're fond of book reading or not, but start book reading and start reading the articles from the newspaper, and start reading the headlines of English channel, English TV channels. They'll help you a lot to improve your reading skills. And
एज फार एज लिसनिंग इज कंसर्न, हमसे एक गलती ये होती है कि हमारा बच्चा, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, हम उसको पेंसिल पकड़ा देते हैं, बस लिखना शुरू कर दो। अगर आप हमारे एजुकेशन सिस्टम पे जाएं, सो सबसे पहला काम हमने किया ये होता है, बच्चे को पेंसिल, हम ट्रेन नहीं क्या करना सिखाते हैं, हाउ टू होल्ड अ पेंसिल। बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग में वो एक स्ट्रैटेजी ही रॉन्ग है। आपने जब एक बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है तो ये अल्लाह पाक का एक नेचुरल सिस्टम है। इट स्टार्ट्स विद लिसनिंग। एक बच्चा पहले सुनना शुरू करता है, फिर बोलना शुरू करता है। सो जब आपकी लिसनिंग बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीकिंग स्किल बेहतर होती जाएगी, बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। सो टू इम्प्रूव योर लिसनिंग, start listening to the different podcasts which are being done in English language. Secondly, if you are fond of watching movies, if you're fond of watching any YouTube channel that is being broadcasted in English language, or if you watch something on Netflix, nowadays Netflix is very popular in Pakistan. I always, it's not often, I always tell my students, do not watch the movies or the videos or the Netflix channels with the subtitles on them. I'm not saying that the subtitles don't have the advantages. Of course, subtitles, they do have the advantages. They'll improve your reading skills. But along with the improvement in reading skills, you also need to improve your listening skill. You know, लेट्स पुट इट इन दिस वे, जैसे एक कंप्यूटर होता है, उसकी कुछ इनपुट स्किल्स होती हैं, कुछ आउटपुट स्किल्स होती हैं। आप कंप्यूटर को कुछ इनपुट देंगे तो वो आपको आउटपुट देंगे ना। सिमिलरली आपकी लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स आपकी इनपुट स्किल्स हैं। आप जब तक इनपुट नहीं देंगे अपने ब्रेन को, तो जो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग आउटपुट स्किल्स हैं, आपका ब्रेन कैसे प्रोड्यूस करेगा? सो जस्ट वॉच whatever you're watching in English language without the subtitles and see the difference within a month. That is one of the ways that can help you to improve your English language, to improve your listening skills, sorry. Daniel had a question, if I improve my vocabulary, can I score well in Ielts? If you are able to improve your vocabulary, it is going to only get you good score in your Ielts writing test. Your speaking test does not have anything to do with, not that much to do with your vocabulary. And your reading skill, again, it doesn't have a lot to do with your vocabulary skill. So basically, बहुत अच्छे students भी, why they are unable to score very good in Ielts is basically, हम Ielts के चारों modules को एक जैसा देखते हैं। Like अगर हमारी English अच्छी है तो we'll be able to score very good in Ielts. That's not the case. Basically, Ielts के हर मॉड्यूल में, whether it be the listening, reading, writing or speaking, the strategies are different, the techniques are different to attempt that very module. And even within that very module, let's say, I'll give the example of writing test. Ielts writing module, it has two sections, two parts. The one is the short question, like not the question number 1 and question number 2. Now question number 1, it demands different kind of vocabulary, it demands different kind of planning, it demands different kind of sentence structures. But when it comes to question number 2 of your Ielts writing module, then the scenario is entirely different. Then it would demand you to look into the topic with a certain kind of depth. Then the topic will ask you to decide, to take a stance. So the vocabulary for both the questions, it varies, and similarly the strategy varies. Okay, if you have any other question, you can write it down. I'm able to see your questions, please. Meanwhile, Mr. Abhay is joining us. ओके मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजुअली जैसे कि 4 मॉड्यूल्स आपने बताए, उसमें से सबसे ज्यादा अगर हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखें तो सबसे ज्यादा लो स्कोर किस में आते हैं, तो हम उसको देखें कि उसको किस तरीके से जो है हम फिर इम्प्रूव कर पाए। Speaking is one of the modules where the students get very low scores, speaking and listening. Okay. How long are Ielts score valid, and are there any restriction or limitation to or how many times someone can take the test?
there is no limitation as far as your IELTS test taking is like concerned. You can take it multiple times. Like I'll give the example of one of my students. She's not my student. She's joining me like in 2 days. Initially, she took her IELTS test and she couldn't score well. So then she contacted me through one of my colleagues. So now she wants to prepare IELTS with me. So mean कहने का मतलब ये है कि she is taking IELTS twice within 3 months, and your IELTS test is valid for a year actually. ओके, मीन्स के 1 ईयर के लिए वो वैलिड रहता है, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। Yes. ओके मैम, जैसे प्रिपरेशन के लिए आपने बताया कि यूजुअली जो ट्रेनर्स हैं वो 30 to 35,000 रुपीज जो है वो उसको प्रिपरेशन का लेते हैं, तो आगे जो टेस्ट होता है उसकी भी कोई चार्जेस होते हैं? Of course, the test is being done either by the Australian language or the British Council. Basically, the popular one is the British Council. Okay. So yes, of course they'll charge. It's an international language testing system, so they charge you. And right now, if we talk about Pakistani rupees, the fee is 46K. Okay. ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम अपना कोई भी आइल्स अकेडमी के थ्रू जो है अपना बैंड को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, मीन्स कि कोई किसी एक बैंड को अगर हमने इम्प्रूव करना हो? देखिए, yes, of course, band can be improved, but then you'll have to pay like the whole fee again. Okay? And yes, academies do very well, but as I told you earlier, if you have shortage of time and you want to improve your IELTS band score, then I would recommend you go for one-to-one sessions. Don't, if academy can give you one-to-one feedback, one-to-one ways to improve, then it's good to join academy. But if not, then don't waste your time and money. मैम, जैसे आइल्स और चीजों में हमारे डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम में अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, इसी तरीके से आइल टेस्ट में भी कोई अपडेट्स आती हैं हमारे पास? What kind of updates मीन्स के उनके फॉर्मेट में, स्कोरिंग सिस्टम में या इस तरह कुछ चेंजेस आते हैं? They have no, that is not done very often. It's set system. They will score you. For example, let's talk about scoring system of IELTS. It's like you have 4 modules, as you now already know. There are 4 modules of IELTS test: listening, speaking, reading, and writing. When you take your listening test, you are scored out of 9 bands. Then you are scored 9 out. Then you are scored out of 9 for your speaking. You are scored 9 out of your writing. So this goes on. When your all 4 modules are being done, then there is an they apply a formula, and the cumulative band score is given to the candidate, and they don't change it very often. Okay. Ma'am, जैसे how do universities or employers typically use IELTS scores in their admission or hiring processes? In Pakistan, it's of no use. If you talk about Pakistan में basically the organizations or the companies, they don't demand you to do IELTS. But if you have to go abroad, then the IELTS is being demanded. And as I've told you, that the companies, they don't demand you to do the IELTS. Like, for example, if you get a job from a company in England, now IELTS would not be demanded by that company, but IELTS is demanded by the government. Okay. And the more, and if let's talk, usually now people, they are applying for the immigration, New Zealand's immigration or the Canadian immigration or Australian immigration. Over there, their immigration IELTS, the demand of band in immigration system is little higher. As a student, it's little like, even if you score 5.0, 5.5, your IELTS band is acceptable for the college or universities. But if you go for immigration, then different countries, they demand different kind of IELTS band score. For example, I would give the example of Canada right now. Now, Canada is the country where majority of Pakistanis are moving to. So they demand you to go for 7.0 in each module.
7.0 in listening, 7.0 in reading, 7.0 in writing, and 7.0 in speaking. ओके। अच्छा मैम, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आइल्स के लिए कोई कोर्स वगैरह लेना ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी के थ्रू भी जो है आइल्स टेस्ट जो है पर्सन प्रिपेयर कर सकता है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर आइल्स, देखिए, preparation is not about preparing yourself for getting prepared by an academy or by a tutor. Basically, right kind of preparation is very much important for IELTS. And by right kind of preparation, I mean you should know that which books will help you, which video channels will help you, which podcasts channel will help you to prepare for your IELTS test. You can do it yourself. ओके मैम, कोई रिसोर्सेज जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें जो अभी आइल्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? I have been, one of my favorite channel is when it's come to speaking module, IELTS with Keith, Keith. ओके He's very good at spoken. Like he has his own podcast, he has an on YouTube, he has his on YouTube channel to help you with the speaking skills. And he would in his YouTube channel he tells his viewers or audience how to prepare for your speaking test, how to prepare for each part of your IELTS speaking test. So it's very good. Yes, I can see Farwa's question. Is it possible to get good score in IELTS using self? Yes, as I've told you, it is possible. You know, just remember, Farwa, nothing is beyond human capacity. The more you challenge yourself, the more successful you are going to be. So it's very much possible. You just, if you decide that I'm going to prepare for IELTS for an hour, then do it on daily basis for a month. You will see the difference. Daniel's question was, how much band is a must thing? Daniel, every country, yes, कितना band must है? हर country का एक, हर college का, हर university का, हर country का अपनी एक demand है. So it varies from country to country and college to college. You need to consult the specific country you want to go to. Some countries are accepting 4.5, some are accepting even 8.0. ओके मैम, अब तक के जो आपके बेस्ट स्टूडेंट रहे हैं उसकी किसी की कोई इंस्पायरिंग स्टोरी या आप सक्सेस स्टोरी बताना चाह रहे हो कि उसने कितने अरसे में कितनी जल्दी कर लिया या फिर किस तरीके से उसने प्रिपरेशन की कि उसने जो है अच्छा स्कोर अपना बैंड ले लिया? I had a student. He was from a very good family. He was a very young boy actually. Ahmed naam tha uska. He just had my classes for almost a month. A month means 21 days. Saturdays and Sundays they are off. Acha, jab wo classes, he was good at language, but he didn't know how he can score good in IELTS. He took the classes for a month, then he disappeared. गायब हो गया classes देने के बाद. No hello, hi or assalamu alaikum. After a month, he called me. He texted me on my WhatsApp, "Mom, can I call you? I want to talk to you. I'm one of your IELTS student." I said, "Okay, fine, call me." He called me and his voice was almost tearful and जिस तरह आपकी आवाज़ नम नहीं होती है, and he was like, "Ma'am, I scored 7.0, although I needed 6 or even 5.5 was okay for me, but I scored 7 and I want to appreciate you and I want to thank you." लेकिन सबसे मजे की बात जो वो ये थी कि उसने मुझे कहा कि मैम मेरी मम्मा और मेरी बहन आपसे बात करना चाहती है. I was so surprised कि उन्होंने क्या बात करनी है. He said कि मैम जब आप जो ही आपकी क्लास का टाइम होता था ना तो they both would sit around और वो आपको सुनते थे and they have learned a lot as well. फिर मेरी उसकी मम्मा से बात हुई, उसकी बहन से बात हुई and they were, छोटी बहन थी उसकी, and they were so grateful.
और उस एक फ़ोन कॉल ने मेरा सारा दिन बना दिया. आई वाज़ सो हैप्पी. I felt so proud. It gave me, like, talking to his mother and his sister, it gave me goosebumps literally. So there are many stories like this. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. ओके मैम, क्या कह रही हैं, हमें नेम्स जो है ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. वो मैं आप मुझे रिटन फॉर्म में दे दीजिएगा, तो मैं जो हूँ कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी. Yeah, sure. एंड ज़हरा, I'll share the names with Rabia, and you'll get the names. ओके मैम, इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपको लग रहा हो इम्पोर्टेंट हो आइल्स से रिलेटेड और स्टूडेंट को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो काइंडली थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दें. बाय द वे, वैसे तो मेरी तरफ से कोई भी जो भी क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं. देखिए, I would talk about only one thing. Be optimistic about everything. The day, the time, the moment you decide that you have to do your IELTS, then decide in your brain as well that I'll score as high as I can. अपने आप को एक लिमिट मत दे बैंड की. लाइक, if your university demands you to do 4.5, don't decide that आपने 4.5 ही करना है. If your university demands you that you have to score 7.0, don't give this ultimatum to your brain. You know, हमारा दिमाग इतना ट्रिकी है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, द मोमेंट यू डिसाइड दिस, ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी कि मैंने 7.0 करना है या 4.0 ही करना है. And trust me, you will not be able to score more than this. Decide that I'll score as higher as I can, and be positive about it. Spend your time on your IELTS preparation on daily basis. ये नहीं करना कि आपने डिसाइड किया कि मैंने रोज 1 घंटा IELTS पढ़ना है, फिर उसको एक दिन 1 घंटा पढ़ा, अगले दिन आधा घंटा पढ़ा, फिर उससे अगले दिन ऑफ ले लिया. एक तो यही नहीं करना. दूसरा, एक जो चीज स्टूडेंट्स बहुत करते हैं, मैंने डिसाइड किया कि मैंने 1 घंटा IELTS को देना है. अब उस एक घंटे में मैंने अपना 1 कप चाय का भी पीना है, मैंने अपने दोस्त से गपशप भी लगानी है, अपने व्हाट्सएप पे जवाब भी देने हैं. डोंट डू दिस. वो फिर 1 घंटा आपके IELTS टेस्ट के लिए ही होना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए ही होना चाहिए. If you stay positive and you prepare, you can score very good in IELTS band on your own. IELTS is not difficult at all. अच्छा मैम, ये यूजली जो है कहा जाता है कि बेसिक इंग्लिश जैसे ग्रामेटिकल और ये चीजें जो है आपकी परफेक्ट हों तभी जो है आप IELTS टेस्ट दे सकते हो, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा प्लीज. आप you're talking about the sentence structures or grammar? ग्रामर, स्पेशली ग्रामर की बात करें तो अभी यूजली जो है हमारे माइंड में भी यही होता है कि अब फॉर एग्जांपल अगर कम्युनिकेट करें किसी से तो हमारे माइंड में जो है ग्रामेटिकल चल रहे होते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, ग्रामर सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, जिसकी वजह से यूजली लोग जो है वो फियरफुल हो जाते हैं. तो इसी तरीके से यही क्वेश्चन मैं करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर क्या होगा. देखिए, बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट IELTS, जैसे मैंने कहा कि IELTS इज नॉट डिफिकल्ट. अगर हम IELTS के लिसनिंग और रीडिंग मॉड्यूल की बात करें ना, तो IELTS के लिसनिंग और रीडिंग मॉड्यूल्स के आंसर्स 2 या 3 अल्फाज से ज्यादा नहीं होते. मैक्सिमम आंसर लिमिट इज 3 वर्ड्स. सो आपके 3 लफ्ज लिखने में लिसनिंग और रीडिंग में क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं? इफ यू आर केयरफुल, जस्ट बी केयरफुल विद द स्पेलिंग्स इन लिसनिंग एंड रीडिंग टेस्ट. As far as speaking IELTS is concerned, उसमें you don't have to be very much perfect in your sentence structures. Your examiner, he is very well aware of that we are humans and to err is human. Sometimes we do make mistakes and they're acceptable. But I'll give you the example of if you are making the same mistake repeatedly in your IELTS speaking test, then your examiner gets the idea that you don't know the rule. Then you get the negative score for this. इसका एग्जाम्पल ऐसे है जैसे वी ऑल हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक रूल है इंग्लिश में. I'll explain it as well. Subject verb agreement means that your verb should agree with the subject of your sentence. For example, if the subject is singular, then your verb has to be singular. If the subject is plural, then the verb has to be plural. For example, if you say the boys is, अगर ये एक दफा आपके मुंह से निकलता है in your IELTS speaking test, it's acceptable by your examiner. He will not score you negatively. But if you continuously keep on using
singular verb with the plurals subject, with the plural subjects, then he'll score you negatively. Writing में you are being scored for your sentence structures, for your grammar. So you have to be careful in your writing test. Grammar is important, of course, because grammar is one of the things that conveys the right message. But I would like to add to it, your all focus should not be on grammar. There are many other things to a language. Your vocabulary matters a lot. Your knowledge matters a lot. When we started the session, I recommended you people to start reading. So reading is the thing that can help you in your whole life. If you compare the people who read the books with the people who don't read, you can see a very huge difference in both of them. So I would suggest all of you to start reading something on daily basis. तो मैम जैसे आपने कहा ना कि मैं काउंसिल करती हूँ यूजली स्टूडेंट को, वहां पर कितनी मुश्किल पेश आती है, मीन्स के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आपके लिए जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा प्लीज. It's like a very difficult question to answer. I had a student, I'll give you the example of one of the students. She was from Saudi Arabia and she was a nurse over there, getting very highly paid. She wanted to apply for immigration. When I used to, she was one of my students in an academy where we had almost 20 students. So whenever I would try to convey to her among the students, it was difficult for her to get my message. But then I thought that I should go on individual basis with her. Then our conversation started and she was able to score good. Okay. हमारे पास एक परवा ही अगेन क्वेश्चन कर रही हैं कि वास्ट वोकेबलरी की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट मींस नो, यू नीड वोकैबुलरी, यू नीड गुड वोकैबुलरी टू स्कोर गुड. देखिए, ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हमारे बड़े कह गए ना, सियाने हमारे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा. सो द मोर गुड वोकैबुलरी यू हैव, द मोर यू विल स्कोर गुड. लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं जो पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है, यूजुअली स्टूडेंट्स करते क्या है, दे मेमोराइज द वोकैबुलरी. ओके, लेट्स से दे विल मेमोराइज 100 वर्ड्स फॉर द राइट स्पीकिंग टेस्ट, एंड ट्रस्ट मी, it is not possible all the times that the topics they get to speak or the topics they get to write in the IELTS test, they would demand them to use those 100 words in that very test. वो बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेंट वोकैबुलरी होगी, आउट ऑफ द टॉपिक वोकैबुलरी होगी. लेकिन वो करते क्या है ना, ऑफ कोर्स हमने मेहनत की है, हमने उन 100 वर्ड्स को याद करने में टाइम लगाया है, तो दे यूज दैट वोकैबुलरी इन फ्रंट ऑफ देयर एग्जामिनर और इन रिटन टेस्ट, and they're negatively scored for that. Because अगर आपकी vocabulary मैच नहीं करेगी आपके सवाल से, आप negatively score होते हो उसके लिए. ओके मैम, यहाँ पर हमारे पास जिया का क्वेश्चन आया, काइंडली शेयर सम ट्रिक्स टू टैकल ट्रांसपेरेंट स्किल्स केसेस. I would like him to elaborate his question further, please. जिया काइंडली अपना क्वेश्चन जो है इलेबोरेट कर दें. तब तक मैम कुछ और कोई टिप्स और स्ट्रेटजीज बताना चाह रही हूँ आप? देखिए, the one I have told you, start watching Netflix without the subtitles. Do book reading. The people who are not fond of book reading, it's very difficult for them to read a book, to pick up a book and start reading. So I would recommend that you can start with allocating only 10 minutes to reading on daily basis. Then gradually you can increase the time of your reading. But start reading something. That would help you a lot.
मीन्स मैम कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अगर आप कंसिस्टेंट होंगे तो आई थिंक सो यू कैन लर्न, और अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा डेवलप है उस चीज में, अगर आप चाहते हो कि वो चीज हो जाए आपके लिए Yes, अचीवेबल हो। yes, very well said. बिकॉज हमारे माइंड में हम पहले से ही बहुत सारे फियर्स लेके बैठ जाते हैं, और जब हमारे सामने वो चीज आती है वो हमारे लिए इस कदर पहाड़ बन चुकी होती है कि हम लोग उसको अचीव ही नहीं कर पाते हैं। You're very much right. Basic, you need to break the psychological barrier that IELTS is something very difficult. IELTS is not difficult. बिकॉज मैम ये मिथ भी बनी हुई है ना कि हम लोग इंग्लिश क्यों सीखे हैं, तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम नेटिव तो नहीं है जो हमें प्रॉपर आए, और इस तरह के बहुत सारे जो है अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दे रहे होते हैं। Okay, yes, we all come across such people, but if मैंने उन बहुत से लोगों को स्टडी किया है, why they are saying this, because they are unable to sometimes um, speak very fluently, or they're unable, they have difficulty learning that very language, इसलिए वो कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ज़बान सीखे ज़रूर, जब एक दफ़ा आपने सीख ली तो उसको इस्तेमाल करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन डोंट लीव समथिंग आउट ऑफ के सीखना ही नहीं है। English is the language that is official language of 100 countries. And now, even not than that, अगर आप देखें तो दुनिया में जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, साइंस पेपर्स हैं, दुनिया की जितनी स्टडीज हैं, दुनिया का हर बिजनेस इंग्लिश में हो रहा है। दुनिया का आप देखिए इंटरनेट की लैंग्वेज इंग्लिश है। आपने अगर फ्रीलांसर बनना है तो उसकी आपके सारे पोस्ट की आपकी सारी इंग्लिश लैंग्वेज है। सो व्हाई टू रन अवे फ्रॉम दिस, व्हाई नॉट टू एम्ब्रेस इट। ऑब्वियसली मैम, दूसरी चीज ये भी है कि जैसे अगर हम अपने हिस्ट्री में देखें तो जैसे सर सैयद अहमद खान, इलामा इकबाल, कायद आजम, उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती थी। सिर्फ ये नहीं थी कि इंग्लिश, उनको फारसी, अरबिक और डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस आती थी, और हमने लैंग्वेज को ना बहुत बड़ा पहाड़ समझ रखा है शायद, इसलिए हमारे साथ जो है यूजली ऐसे ही होता है। ओके, देखिए जी जी मैम। उर्दू को आपने देखिए, उर्दू को भी आपने जी जी मैम, आप कंटिन्यू करें, उसके बाद हम इसका आंसर देखते देखिए, हैं। उर्दू को भी आपने प्रमोट करना है और अरेबिक को भी आपने प्रमोट करना है, और इंग्लिश को देखिए सीखे जरूर, लर्न इट। Okay, transfer is basically a term used in counseling when a student client be consult gets emotional with the counselor, teacher, or guide. Then it is entirely the responsibility of the trainer to um, what's the word I would use, to keep situation in control. And the more professional you are, the more the things are in control. And with the passage of time, you learn a lot. मैम ऐसा केस आया है कभी आपके पास? No, I just, there are ways to deal with the students. मेरा स्टूडेंट चाहे वो एक PhD का है या एक मैट्रिक का है, मेरे लिए वो स्टूडेंट ही है। So I have my own way to deal with them. Be professional, be ethical. अगर आपको लगता भी है कहीं पे कोई like अच्छा a student is trying to get personal or like trying to cross the boundaries, you are the one who can you are the one who should be in control of that. वो तो बच्चा ही है। ओके, हमारे पास तूबा का क्वेश्चन है कि इंग्लिश लर्निंग बुक्स आर आल्सो यूजफुल। You're talking about the book that is written by Renan Martin. It's very good. That's my that is one of my most favorite books when it comes to grammar, learning grammar of English language. देखिए बेसिकली होता क्या है कि we pick up a book, we memorize the rules, we don't practically use them, so then you forget them. Similar is the case with the vocabulary. You memorize the words and then you don't use them in your daily vocabulary, in your daily conversational sentences, then you forget them. So usage is very important. ओके मैम, कोई इंस्टीट्यूशंस जो आइल्स करवाते हो रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में और ऑल ओवर पाकिस्तान, अगर आप थोड़े एक दो इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें बता दें। Nikon is doing very well in Rawalpindi. Okay. And other than Nikon, we have, basically, it depends on the trainer.
sometimes the people at sometimes Nikon, it has very good trainers, and but when the training is changed, the things are not the same. So do check with the trainer before submitting the fee. Have a mock class with the trainer. If you're comfortable with the trainer, then pay the fee. Otherwise, don't waste your money. ओके मैम, हमारे साथ ना कुछ ऐसे भी बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंग्लिश लिटरेचर वगैरह कर रहे हैं, तो उन थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं साथ में कि अगर उनके वो करियर्स अगर आइल्स का चुनते हैं फॉर एग्जांपल एज अ ट्रेनर, तो इट इज गुड फॉर देम, और क्या उनको स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी इसके लिए? The people who are doing taking degree in literature, if they want to take their degree of masters from a university that is abroad, then IELTS is good for them, and it would be easy for them to do IELTS comparatively speaking. ओके, और मैम एज ट्रेनर अगर वो बनना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ही रह के, तो एज अ प्रोफेशन अगर फॉर एग्जांपल वो साथ में एक पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं, तो इज इट गुड फॉर देम, और क्या उनके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी? Of course, it's good for them. Like it is one of the freelancing skills, so they can become. But I had a student who also wanted to become the IELTS trainer. To become an IELTS trainer, you need to take IELTS test first. It's not mandatory. Like rules नहीं है कोई कि who can become IELTS trainer, who cannot become IELTS trainer. But once you have taken IELTS exam yourself, you know the very nitty and gritties of that test. And secondly, British Council, they train the people to become the trainers for IELTS. So if somebody who's very serious, they can consult British Council as well. ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। आई थिंक तो मैम इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज जो है हम एंड करते हैं आज का हमारा लाइव। और अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो हो कमेंट सेक्शन में अगेन पूछ सकते हैं। सॉरी मैम, आज मेरा थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगी बीच में, आजकल लाइट का बहुत इशू चल रहा है। I know that it doesn't matter. I knew this. ओके, आई थिंक तो और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज का जो सेशन है यहीं पर एंड करते हैं। ओके, आज काफी कुछ मैम आपसे सीखने को मिला, आइल्स के बारे में प्रॉपरली एक एक स्टेप के बारे में हमें आइडिया हुआ। एंड स्टिल जो स्टूडेंट्स जो हैं अगर चाहते हैं कि आपके साथ मैम ने टिप्स और स्ट्रेटजीज दी हैं उनके बारे में भी आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या टिप्स और स्ट्रेटजीज इजी रहेंगी। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड इतनी अच्छी टिप्स और स्ट्रेटजीज देने के लिए, और इतना अच्छा जो है आज आपने हमें बताया। थैंक यू सो Thank you मच। so much for inviting me. I'm grateful. थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, dear, and Allah Hafiz to all of you. अल्लाह हाफिज एवरीवन।